Hi everyone, welcome. So I am starting this chapter, National Income Accounting, in which I am gonna cover final goods, consumption goods, and the capital goods. Now you must be asking this question that what generates the economic wealth of any country and what is the criteria? What is the criteria कि ये country rich है or this country is poor? Now you will be thinking कि क्या it depends upon the natural wealth या फिर minerals, forest, it depends upon the rich resources. No, it is not like that. I can give you an example. You see Latin America, you see Africa, they are having very rich resources, but at the same time they come in the poorest countries in the world. Now on the other hand, you see Switzerland. See, Switzerland is having very strong food processing units. They manufacture they have multinational company. You see Nestle, it is of Switzerland only. They manufacture watch. What they have multinational companies. Rolex is Switzerland ki company. Okay, so they have very good manufacturing products, very good manufacturing units, in spite of not having good resources, good natural resources. Okay, but they are having very good wealth in their country. Okay, so it now you can consider this, that what economic wealth is all about. See, it doesn't depend upon the possession of resources कि आपके पास में कितना resources है, how much resources you have, or natural resources I'm talking about. It only depends upon the flow of production. See, it is depending upon the manufacturing. Okay, it depends कि आपने क्या कितना कैसे manufacture किया है, and on consequences with that, जो भी results, जो भी outcomes उस चीज के निकलेंगे, that will only decide your income, that will only decide your wealth. Okay, so that's what it is. Now in modern economic scenario, the flow of production, if you ask, the flow of production you ask, it only it includes the production of commodities, right? कि क्या मतलब कौन सी कितनी commodities है. अभी commodities के अंदर you can include goods. Okay, you can also include the services. As you all know, they also include in the production, right? So चाहे वो small companies हो, चाहे वो small, large, medium enterprise हो, okay, they all will include in the production only, right? So basically it depends upon that thing only. अभी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन तो देख लिया. अभी यू मस्ट बी आस्किंग कि ये जो कमोडिटीज हम प्रोड्यूस करते हैं उनका होता क्या है, मतलब व्हाट विल हैपन आफ्टर प्रोड्यूसिंग दीज commodities. So basically हर चीज चाहे कुछ भी हो, they only tend to sell. Okay, they मतलब whatever we are making, either it's smallest. Now you can smallest में आप क्या ले सकते हैं, a pin, ठीक है, और largest में you can see it, anything. Take aeroplane, machineries, tools, anything, giant tools, giant machineries, anything, they only manufacture for sale. Okay, and you can also add the services. अभी services में you can include, suppose आपका कोई lawyer है, okay, और doctor, जो भी है, they are also giving services for having the financial credits. Okay, they only do for financial thing only. पैसों के लिए सब कुछ हो रहा होता है. तो whatever you are producing, whatever you are doing, you are only doing for the for having money, for having back. पहले barter system होता था, अभी ऐसा हो गया है कि you are only producing to sell. Now अभी sale का एक और फंडा है कि raw materials भी होते हैं, ठीक है. अभी raw materials, what is the scenario of raw material? Raw material का भी यही है कि they are also gonna sell. Raw material को भी बेचा जाएगा when they can become the final goods. Now let's take an example. See, अभी farmer है, this farmer is producing cotton. Okay, now they produce cotton and then they spin this, this become cloth, and the final cloth, the final good will look like that. Okay, suppose this shirt आप printed curtains ले लीजिए, धोती कुछ भी ले लीजिए cotton का, तो ये final good है. अब this question may be arised कि अपन कैसे कह सकते हैं कि ये ही final good है.
Now this shirt becomes a final good. How? It becomes because it cannot be used again. मतलब इस शर्ट का वापस आप कोई भी कॉटन नहीं बना सकते उस you know, you cannot make that धागा, it cannot be thread again. It might be पोचा of your मम्मी, घर के लिए पोचा बना सकती है मम्मी आपकी, but ये फाइनल गुड है because it cannot be recycled. इतना सा फंडा है. This shirt cannot be recycled, that is why it is a final good. But there is a big but in it. What is it? See, what happens कि अभी there are some final goods जो कि ट्रांसफॉर्म होते हैं कंजप्शन के टाइम पे. Now अभी ये क्या, इसका क्या सीन है? What is this consumption and all? I'm giving you an example. Wait. So basically you see चाय पत्ती, okay? अभी you have ये tea leaves, right? Now you are not having tea leaves. खुद tea leaves नहीं खा लेते हो आप, right? You are making this, मतलब making tea by tea leaves and you consume tea. So the tea will be the final good. लेकिन this tea leaves are also a final good अगर ये economically आप इसको use नहीं कर रहे हैं तो. Similarly जैसे कि कोई भी spices, kitchen का कोई भी product ले लीजिए, वो सारे final good ही कहलाएंगे. But ये ऐसे final goods हैं जो कि transform होते हैं in terms of consumption. Now अभी इसमें भी एक बहुत बड़ा सा बट है, okay? एक आंखें खुल जाने वाला. So what is it? अभी you see the tea cafes, tea stalls, बहुत सारे tea stalls वगैरह होते हैं, right? उसमें क्या होता है कि जो भी tea आपने tea leaves खरीदी है, that is not a final good. The tea leaves are input, क्योंकि ये आपने commercial, you know, it is used economically. Now I'll explain. See, अभी चाय पत्ती आपने खरीदी है, लेकिन आप बेच चाय बना कर रहे हैं, तो चाय से जो पैसा मिल रहा है, that मतलब जिस चीज से पैसा मिल रहा है, that will become the final good, not the input, not the tea leaves जो कि आपने यूज करी है. तो here the tea leaves will not be the final good as at your home. अगर घर के लिए खरीदा है मम्मी ने, तो वो होगा, वो फाइनल गुड कहलाएगा, बिकॉज कुकिंग कर रही है मम्मी, इज नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, फॉर एनी टी और एनीथिंग, नॉर्मल आपके लिए बना रही है, तो शी इज नॉट गेटिंग पेड. तो इट डिपेंड्स अपॉन the nature of economic goods, okay? The nature of economy, okay? It is depend upon that कि अगर आपने कुछ सेल करने के लिए if you have taken, तो वो final good कहलाएगा. That means the chai will be final good, not the green leaves, right? So final good वो होता है जो कि उसके nature पे depend नहीं करता, depend करता है उसके economic nature पे, right? So that's what it is. Now you must be asking, हो गया? See, थोड़ा सा बाकी है, okay? एक और topic. So basically when we are talking about final goods, let's talk about the consumption and capital goods. बहुत simple है, कुछ भी नहीं है इसमें, okay? So basically consumption goods वो होते हैं जो you know, these are those who can consume easily. You just take that, consume that, फेंक देते हो, that non-durable जिनको बोलते हैं. अभी आपने you take jam, you take clothes, 2-3 महीने पहनोगे फेंक दोगे. That's what we guys do, right? So that's what it is. Now when it comes to the capital goods, now capital goods का मतलब जो long जो durable होते हैं, firstly. दूसरे capital goods includes machineries, tools, ये सारी चीजें जो होती हैं ये capital goods में आती हैं. तो they both are different. Capital goods को you just cannot consume, okay? You have to transform that. और कैपिटल गुड्स जो है वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं होंगे. कंज्यूमर गुड्स का ऐसा, सपोज आपने टमाटर खरीदा या खाने का कोई सामान खरीदा, टमाटर की सब्जी बन जाएगी एंड यू विल कंज्यूम दैट. बट कैपिटल गुड्स हैव डिफरेंट सिनेरियो. लेट्स सी दैट. अभी यू मस्ट बी आस्किंग कि फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या फाइनल गुड्स होते हैं? सी, they themselves don't get transformed, right? अभी टमाटर ले लिया, टमाटर की सब्जी बन जाएगी, लेकिन टूल्स खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे. These tools will transform some other things. Suppose these tools are, you know, like backbone of every production. कुछ भी मशीन आप सोच सकते हैं, किसी भी प्रोडक्शन के लिए मशीनरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इन मशीनरीज के लिए these has become backbones. तो किसी भी प्रोडक्शन में, किसी you know, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए
फाइनल गुड बनाने के लिए द कैपिटल गुड्स विल हेल्प, द कैपिटल गुड्स विल हेल्प, राइट? सो these, you know, these capital goods are like ड्यूरेबल होते हैं और धीरे धीरे रिप्लेस्ड हो जाते हैं, ग्रेजुअली इट गेट रिप्लेस्ड, राइट? सो बेसिकली व्हाट इट इज, अभी ये नहीं सोचना है कि ये फाइनल गुड्स क्या सिनेरियो है, दे आर फाइनल गुड्स येट दे आर नॉट अ फाइनल गुड्स, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, अपन इनको एज इट इज कंज्यूम नहीं कर सकते. ओके, दैट्स व्हाट द कंसेप्ट इज. नाउ देयर इज मोर. सी, अभी कुछ नहीं है, चैप्टर बहुत लंबा है, तो वी आर गोना डू छोटे छोटे स्पैन्स में. ओके, बट for now we are done. Okay, we are all done. I will be continuing this chapter. Okay, till then, bye bye. Thank you so much. Please do subscribe and follow on Instagram, and please do comment, yeah, whatever you feel, acha bura, just comment na. And do like and wait for my next video. I hope you're liking this. Thank you so much.